Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 27th and 28th of August. The session will be quite interesting and important students, so stay tuned with us till the end. In this video students, we are talking about a letter of intent that has been signed with the World Food Program to combat global hunger. Then Ministry of Finance, they have introduced one-time, one-way switch facility from UPS to NPS, right? This is your unified payment system, unified pension system, and NPS is your new pension system, right? We will be discussing it. Then India has released the first ever national guidelines for animal blood transfusion, blood banks, and JP Nadda ji inaugurated key health welfare initiatives in Madhya Pradesh. We will be discussing all these things in detail, so stay tuned with us till the end. The content provided in this video is very refined and will be very beneficial in the competitive exams. If you are new here students, do subscribe to us and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs students. First is our country has signed a letter of intent with World Food Program to combat the global hunger. Right, this will strengthen the cooperation in addressing the global hunger issue. Right, how we can manage it, how we can reach the large population who is not getting food on daily basis, how we can cater that. Right, and this initiative comes under the Vasudev Kutumbakam, the world is one family. Right, and it is India's global humanitarian outlook program here. Also, the agreement here, it foresees supplying of up to 2 lakh metric tons of fortified rice over the next 5 years to help the needy who are not able to get food on daily basis. Right? So, in August from India, that is DFPD, that is the Department of Food and Public Distribution, that comes under the Ministry of Corporate Consumer Affairs, Food and Public Distribution. They have signed this letter of intent with the World Food Program, right, that is of United Nations, and it was signed in New Delhi, and it is to strengthen the cooperation in addressing the global hunger. Right, so here you can see LOI was signed between India and World Food Program to combat global hunger crisis. Right, and the supply commitment here is of 2 lakh metric tons of fortified rice over the next 5 years. Next is Ministry of Finance. They have introduced one-time, one-way switch facility from UPS to NPS. What is this UPS? First of all, students, UPS is your Unified Pension Scheme and NPS is your National Pension Scheme. This UPI was introduced recently by the Government of India, and it will allow the individual central government employees to switch from the existing mode to this new system, right? And this UPS Unified Pension System, this came on 1st of April in 2025. See, the important under this thing is that this is guaranteeing almost 50% of the pension to the employees when they retire. As of now, this national pension system, in this there is no fixed return guaranteed, but you will get a significant corpus also at the end, and also some amount of that rest will be converted into your pension scheme. And in this NPS, recently government has introduced some companies in which your money will be invested in terms of a mutual fund only, and you will be getting almost 60% of it, and rest 40% will be converted into your pension. Right, this is your NPS. So now what the government is saying, that you can have this switch facility, that means you can switch one time. Right, and when you go from this NPS to OPS or UPS, there is no going back. Right, you won't be going back from NPS to UPS or from UPS to NPS again. Right, only one switch facility. Right, because right now all the existing central government employees, they are under NPS, and when they make a switch to UPS, then they won't be able to come back to this NPS facility. This facility may be exercised by the UPS optees anytime a year prior to the date of superannuation or 3 months before the deemed date of retirement in case of voluntary retirement. Right, so here you can see
What we are saying is that Ministry of Finance, they introduced one time one way switch facility allowing the central government employees to move from UPS to the national pension scheme, right? That means right now all the individuals who are employed, they are under UPS, and if they want to shift to the NPS, that option is available, right? What I said earlier was that from NPS to UPS facility is also available, and now I am saying that from UPS to NPS facility is also available, because till last year all the employees were under NPS, right? So they are given the option to move to UPS, and from now this year onwards, from 1st of April 2025, all the employees are under UPS and they have the facility that they can go back to NPS, correct? And this facility will remain open from 30th till 30th of September 2025 of what? Of all those individual UPS that want to shift to NPS, correct? Then students, apart from this, if I ask you what is the rank of India in the Henley Passport Index, India stands at the 77th position, and India can go to 59 countries visa free, correct? Then there was a bomb, that is Gazap bomb. This Gazap bomb, this is a 970 kilogram bomb. It was of which country? It is of Turkey, and it is considered one of the most powerful non-nuclear bomb. Moving on, next, our country India, they have released the first ever national guidelines for animal blood transfusion blood banks, right? What is this? That if any animal is injured, then in order to provide blood to that particular animal, this facility has been brought. So the Department of Animal Husbandry and Dairying, right, they have released India's first comprehensive national guidelines and standard operating procedures for animal blood transfusion and blood banks. So the blood banks, these blood banks will be for animals, correct? In current scenario, if we see our country, the most animal blood transfusion have so far been performed in emergency situation without any standard operating procedures, right? And now there will be a proper standard operating procedure also for this. Take a note of it. Apart from this, students, remember recently whose statue was unveiled in Italy? So Maharshi Valmiki's statue was recently unveiled in Italy. Apart from this, tell me recently, if we talk about Kaziranga National Park, right, this is the national park that has the third highest tiger density in India with 148 tigers. Then Sustainable Agriculture Day, remember this is important. Why? Because recently Maharashtra observed on 7th of August as the National or Sustainable Agriculture Day. Then one more, remember, DPIIT. They have partnered or signed a memorandum of understanding with Ather Energy in order to boost the electric vehicle manufacturing. Next is Union Minister JP Nadda has inaugurated key health welfare initiatives. They were inaugurated where? In Madhya Pradesh, right? And here you will be seeing various key health welfare initiatives has been launched. These initiatives, they are centrally sponsored, that means sponsored by the central government, right? Various health programs, they are designed to strengthen the public health and community outreach, specifically in Madhya Pradesh. There are VVCs. What are VVCs? Vyay Vandana cards, right? He also launched the distribution of Ayushman Bharat Vyay Vandana card for 8 lakh citizens and handed over the PVC cards to 5 elderly beneficiaries during the event, right? Who we are talking about? Who handed all this? As you can see here in the in the picture, Chief Minister JP in the Chief Minister here. Who is the Chief Minister of Madhya Pradesh? Dr. Mohan Yadav, right? So we are talking about various key welfare initiatives in Madhya Pradesh inaugurated by JP Nadda ji and the Chief Minister of Madhya Pradesh, Mohan Yadav, where these initiatives were launched. Jabalpur, Maharashtra. Here you can see the inauguration of 2 medical colleges in Shiopur and Singrauli, launch of Ayushman Shakti Smart Chatbot and Asha Samvad platform. These are some initiatives that have been launched here. They will be quite beneficial for the general public of Madhya Pradesh, right? Take a note of this. With this, you will be seeing this Ayushman Sakhi Smart Chatbot. You will be able to have a platform, an interactive platform where the citizens will be able to easily access the information and support under the health scheme. Then apart from this, we are seeing that various initiatives, MPC cards were also launched. MPC is your mother and child card, right? Mother and child protection card. They were introduced here, right? And these are basically to help the mothers for the welfare of their children as well as for them. Maternal health cards are these.
Moving on. Next. Okay, one more thing, students. Tell me recently, if I ask you, who has been appointed as the new chairman of IRDAI? So Ajay Seth. And he will be in this position for how many years? For 3 years. Who has been appointed as the new president of ASSOCHAM? Tell me the name. Nirmal Minda as the new president of ASSOCHAM. Next, OpenAI, they have launched India's first learning accelerator to support the students and teachers. We all know OpenAI. OpenAI is the company that launched ChatGPT, right? It is an AI organization, right? So OpenAI, now what they are doing is they have launched India's first learning accelerator, and for this they have partnered with IIT Madras, right? This was during an event that was held in New Delhi. With this, the aim is to empower the educators, the teachers, right, as well as the students, where they will be provided with AI tools, right, and training will also be imparted upon them so that they will be able to use these AI tools in a better and refined way. Correct. So this OpenAI Learning Accelerator, it is India's first initiative under the AI Impact Summit, where the focus will be on that how can we benefit the teachers, the educators and the students with the new AI tools, and it can help them in their learning. And almost 4.5 crore rupees fund has been allocated here. The tool name here is Study Mode, and 5 lakh free ChatGPT licenses has been provided to the teachers and students so that they will be able to use it. Right, students? Next, students, tell me who has been appointed as the director of the RBI Central Board. Anuradha Thakur as the director here. Right. Then apart from, tell me which city has been declared as the cleanest city under Swachh Sarvekshan for 24-25. Which is that city? It is Panaji, that is in Goa. Correct. Then apart from, tell me this Tracers mission. This Tracers mission was launched by which organization? By NASA. And this Tracers mission is basically to study the Earth's magnetic shield and space weather impacts. Moving on. Next is Ministry of Port, Shipping and Waterways. They have partnered with NMC, CHPA, NTC, PwC to launch Marathon 2025 at IIT Madras. So let's see first of all which are these organizations we are talking about. So Ministry of Port, Shipping and Waterways, they partnered with National Technology Center for Ports, Waterways and Coasts, that is NTC, PwC, then IIT Madras, then National Maritime Complex, NMC, and Chennai Port Authority. And they have launched this Marathon 2025. What is a marathon? In basically a marathon, a problem statement is given to the teams, various teams, and they do their research and development and they come up with a product to solve that particular problem, right? And based on that, various teams are also selected. They are being given various grants also to continue working on that project. So coming back, this marathon, this is organized under the Sagarmala Startup Innovation Initiative, right, that serves as a curtain raiser to the India's maritime sector, and this was during the India's Maritime Week that will be observed from 27 to 31st of October. The aim here is basically that how can we increase the research and development, how can we come up with various startups in the maritime ecosystem, how can we boost the maritime ecosystem with new initiatives and technology upgrade. Correct. So take a note of this, and here you are seeing these are the partners here. Also, as I mentioned that during a marathon, the startups that are working on the problem statement, when they are selected, they are giving certain grants. So here you will be seeing 10 lakh, 60 lakh and 1 crore rupees grant will also be provided to various different companies or the products or the teams that are working there, or we can say the startups that are working there, right? Then apart from, tell me this Bold Kurukshetra. This Bold Kurukshetra exercise was held between which countries? Between India and Singapore. Bold Kurukshetra. Where was this held? Location? It was held in Jodhpur. It was held in Jodhpur, right? Then apart from this, tell me recently who created history, right? First Indian to reach the FIDE Women's World Cup final. Name that woman. She is Divya Deshmukh. She became the first Indian to reach the FIDE's Women World Cup final. Moving on. Next we are talking about, students. Government of India, they have constituted 3 high-level committees to commemorate the 150th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, the Home Minister, the first Home Minister of independent India, then Birsa Munda ji,
right? The famous tribal leader, and 100th anniversary of Atal Bihari Vajpayee ji, as you can see on the right, the former Prime Minister of India. So 3 high-level committees has been established here, correct? Sardar Vallabhbhai Patel, the first Home Minister of independent India, then also known as the Iron Man of India, then Birsa Munda ji, the famous tribal leader, and 100th birth anniversary of Atal Bihari Vajpayee. Each committee here will be chaired by Prime Minister Narendra Modi, and the committee were formed through separate gazette notifications issued by the Ministry of Culture. And here the committees, right, they will be having different members. Say for example, for Sardar Vallabhbhai Patel committee, this will have 124 members. Then committee of Birsa Munda will have 118 members, and committee for Atal Bihari Vajpayee will have 124 members, right? Take a note of this. Here you can see the respective members, right, and why we are observing this. Next is, okay, one more thing. Apart from this, tell me recently, who became the fourth Indian woman to earn the Grandmaster title in chess? So she is Divya, right? Then apart from this, who won the Belgian Grand Prix? It was won by Oscar Piastri. Belgian Grand Prix, Oscar Piastri. Then one more thing, remember, Prime Minister Narendra Modi, he is the second, or India's second longest serving Prime Minister, right? Next, Government of India appointed Goldman Sachs as the sole banker for the stake divestment in the IOB, CBI, UCO Bank, Punjab and Sindh Bank. I repeat, Government of India has appointed Goldman Sachs, the global investment banking firm, as the sole transaction advisor for the divestment of the stakes in 4 public sector banks, that are Indian Overseas Bank, Central Bank of India, UCO Bank and Punjab and Sindh Bank. Here you can see the divestment size up to 5% of the Government of India's equity, current stake over 90% in each bank, and SEBI deadline is 1st of August 2026. Right? Next. So in simple terms, up to 5% of the Government of India's equity will be divested here. Next is Tata AIA, they have launched a Health SIP plan and Health Buddy app. See, SIP here is systematic investment plan, right? And in monthly basis, you will be able to invest in these plans, correct? So what we are talking about, the launch of Health SIP and Health Buddy plan, launched by whom? Tata AIA General Insurance Company, right? And here access to 24 plus medical specialties will be provided here also, right? So these are the 2 products that has been launched. Apart from this, students, if I ask you, tell me which state has launched a helping desk in Pune. Okay, if it is Pune, then remember it is Maharashtra that has launched a helping desk in Pune to protect the farmers from price fluctuations, right? Then Ladakh's first Astro Tourism Festival, it was held where? It was held in Leh, Ladakh. Then apart from this, remember Mukhyamantri Pratigya scheme. Mukhyamantri Pratigya scheme. This Mukhyamantri Pratigya scheme was launched in which state? It was launched in Bihar, and it is to support the youth and internships, right? Youth internships. Next is appointments and resignation. IRSE, that is your Indian Railway Service of Engineers. This IRSE officer SC Jain has appointed with additional charge as the chairman and managing director of RVNL, that is your Rail Vikas Nigam Limited, right? Take a note of this, very important question. Direct appointment question will be asked here, correct? Then apart from this, if I ask you, who became the youngest to summit Mount Elbrus? He is an Indian, Tejbir Singh. He is just 6 years of age, right? Then apart from this, Bharat Mobility Global Expo for 2027, set to showcase innovation in sustainable and inclusive mobility region, will be held where? In Delhi NCR region, and this is the 3rd edition of the Bharat Mobility Global Expo. Moving on. Next, National New Development Bank, that is NDB, right? And this has been established by BRICS, right? So NDB appointed Dr. Rajiv Ranjan as the Vice President and CRO, that is your Chief Risk Officer, for the next 5 years. Even if you see, China has recently invited India
Indian Prime Minister Narendra Modi and Russia's President Vladimir Putin in a meeting, and this is a huge significant step, right? And with this it is saying, and there was multiple articles also that are saying that we can now see that this new development bank NDB can be the new IMF or World Bank, right? That means this new development bank has the capability to replace the IMF and World Bank, right? Next is related to sports. Khelo India Water Sports Festival 2025. If we look at the overview, important students, let's go with first Himalayan Kingfisher. This is the mascot here. We discussed this day before yesterday. The logo highlighted as Shikara, and that Shikara is basically where this is the Dal Lake where this Shikara is. This is the Shikara here. This is the mascot Himalayan Kingfisher, right? Then if we see top medal tally, Madhya Pradesh claimed the top position with 10 golds, 3 silver, 5 bronze. Here you can see this was the first ever Khelo India water sports event held where at Dal Lake in Srinagar from 21st to 23rd of August. Ministry of Youth Affairs and Sport is the organizer here. Here you can see the mascot and the logo is of Shikara, team champion, right? And everything you can see rest things here. Next is World Youth Archery Championship 2025. Here India shines in the Winnipeg. Winnipeg is in Canada, right? So we are talking about the World Youth Archery Championship. Where was this championship held? It was held in Winnipeg, Canada. It was from 17th to 24th of August. This is the 9th edition of this event, right? Take a note of this. And it is World Archery that organized this event, right? And here you can see that if we see the medal haul, India's 24-member contingent secure 8 medals, highlighting the dominance in the compound events and historic achievements in recurve, placing India second overall in the medal tally, right? And we have but won the most number of medals, gold, that is 4. We have tied with USA. Who topped the medal tally? South Korea secured the first position, and our country India was on the second position in the medal tally. And who was third? USA was on the third position, right? Here you can see the rest important items. The important another thing is that this is the 19th edition of the World Youth Archery Championship. Moving on, and here are the winners from India, the gold medal. Next is books and authors. Sanjay Baru's book Secession of the Successful, The Flight Out of the New India. This has been released and it is authored by the political commentator and policy analyst Sanjay Baru and has been officially released. It was published by Penguin Viking India. Take a note of this, students. This book is important, can be asked, right? And this book, it explores the change in the mindset of the Indians that are choosing to settle permanently abroad, terming them as non-returning Indians, right? Next is state news, students. Delhi and Oslo, they have launched a joint initiative, that is Dosti, to accelerate the adoption of urban e-mobility solutions. I repeat, Dosti, that is your Delhi Oslo Smart Transport Initiative. This is a joint initiative between Delhi, India and Oslo, Norway. This was during the third edition of India Clean Tech Transportation Summit, the aim of which is to adopt the urban electric mobility solutions. So in simple terms, in order to adopt the electric mobility solutions in Delhi and to help the transition in Delhi from polluting vehicles to this electric vehicles, this is the initiative main aim here, right? And hence Dosti. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part. It will be quite beneficial and then we'll proceed to the homework section. Also, students, I need to see maximum participation here of the students, and do hit the like button if you find that the session so far was interesting and you have learned something. Next is, according to the Comprehensive Modular Survey Telecom 2025 released in May by the National Statistics Office under the Ministry of Statistics and Program Implementation, what is the percentage of rural women that are aged 15 years and above do not own a mobile phone? It is 51.6%, right? And India, about 85.5% of the households own at least one smartphone. Next, according to ISSAR, that is Indian Space Situational Assessment Report for 2024 released by ISRO in May 2025, how many Indian spacecraft had been placed in Earth orbit as of December 1st, 2024. So by this date, December 1st, 31st December 2024, a total of 136 ISRO or 136 Indian spacecraft has been placed in the Earth orbit.
Next, in June, which organization has released the report titled India's AI Revolution, a roadmap to Viksit Bharat, which estimate that India will require additional 1 million skilled AI workers by 2026. So it is report released by MEITY, Ministry of Electronics and Information and Technology. Next, according to the Global Education Monitoring Report, Leadership in Education Lead for Learning, published by UNESCO in June, for every 100 girls, how many boys attain the minimum proficiency level? So for every 100 girls, how many boys it is? 87. That means these boys, out of if 100 girls reach the minimum proficiency level, then only 87 boys reach the minimum proficiency level. Next, India secured which rank in the climate change performance, topped by Denmark at the 4th position, with the first 3 positions remaining vacant. So, which India has secured which rank here? So, India stands at 10th position in this index, right? And India has secured a high rating in the greenhouse gas emission and energy usage category. Next, which country leads global energy investment according to over 25% of the total global energy investment as per the IEAE World Energy Investment Report released in June 2025? It is China. Which country leads the global energy investment? It is China. Next, mention the name of the city that is not ranked among the top 5 cities according to their data center capacity under construction as of end 2024, as per the report released by Global Data Centers Market Comparison Report released by Cushman and Wakefield in June 2025. तो मुंबई वो सिटी है that is not ranked among the top 5 cities according to their data centers capacity. Next, which organization released the State of the World Population Report titled The Real Fertility Crisis, the Pursuit of Reproductive Agency in a Changing World, that highlights the barriers preventing people, including India, from achieving their reproductive aspiration. It is United States Population Fund, right? UNFPA. And the report finds that 1 in 5 individuals globally report not to have the number of children that they desire because of the rising cost of the goods, of housing, other concerns, job insecurity, and many more. Next, according to the World Bank's biannual report titled Global Economic Prospectus for June 2025, what is the GDP growth rate projected for the FY26? It is projected to be around 6.3%. Next, what is the rank of India in the 19th edition of the Global Gender Gap Report released by World Economic Forum? So, what is the rank here of India in the 19th edition of the Global Gender Report? Our country stands at 131st position, and Iceland has secured the first position here for the 16th consecutive time. Next, ILO database on international labor statistics released by the International Labour Organization in June. What is India's social security coverage as of 2025? It is 64.3%. Next, in June, the NATO, they have launched the 53rd edition of their maritime focused exercise, that is Baltic Operations 2025 Balatops. It was held where this question is asked. It was held in Latvia to strengthen the regional security in the Baltic Sea region. Next, as per the data released by the Tea Board of India under the Ministry of Commerce and Industry in June, what was the total area or total tea export from India during the calendar year 24? So it is 254.6 million kilograms. Next, according to the UN Women Fact Sheet titled Women in Politics 2025, in June, what percentage of women are currently represented in India's Union Cabinet, marking the first lowest proportion since 2011? It is, tell me, according to UN Women's Fact Sheet, Women in Politics in June, what percentage of women are currently represented in India's Union Cabinet, marking the second lowest population or proportion since 2011? So it is 9.7%. Women ministers are there. Next, according to the report Yearbook for 2025 Armaments, Disarmaments and International Security, that is released by CIPRI in June, what is the number of Indian nuclear arsenal warheads as of January 2025? It is 180. Next, as per the Economist Intelligence Unit, that is EIU, they have released the Global Livability Index 2025,
which of the following cities is not among the top 5 most livable cities in the world? Among the following, if you see, Auckland of New Zealand is not among the top 4 cities suitable for living. Copenhagen on first, Vienna on second, Zurich third, Melbourne fourth, Geneva fifth. Next, as per the Skytrax World Airline Awards that was held at the Le Bourget Airport in Paris, which of the following airlines was not among the top 5 airlines globally? Among the following, Indigo is not among the top 5 airlines globally. Next, Amazon.com Incorporation successfully launched the first 27 satellites of its what? So it was for the 71st, or it was for what? Why they have launched these satellites? They have launched these satellites. So students, let's take this question in the homework part, right? Do comment below. Next is, what is India's rank in the Global Energy Transition Index as per the World Economic Forum's report released, Fostering Effective Energy Transition in 2025. So what is the rank of India in the Global Energy Transition? India stands at the 71st position. Next, which of the following universities is not ranked in the top 5 globally as per the Quackrelli-Simon World University Ranking released by Quackrelli-Simons? It is, which of the following university is not ranked in the top 5? If we see here, Indian Institute of Technology for Delhi, right, is not among the following listed here. MIT of USA first, Imperial College London second, Stanford University third, University of Oxford fourth, and Harvard University fifth position. Next, mention the organization that along with Food and Agriculture Organization has issued a report titled Hunger Hotspots. Right, this warns that the hunger is likely to get much worse in 13 countries and regions, which are among the world's most serious hunger affected areas in the coming months. So mention that organization that has along with Food and Agriculture Organization released this report. It is World Food Program. Next, according to the Performance Grading Index 2.0 for 23-24 released by the Department of School Education and Literacy, which of the following states and union territory is not among the top 5 performers in the school education? So it is Maharashtra, that is not one of the top performers in the school education. Next, which Indian university secured the highest global rank in the Time Higher Education University Impact Ranking 2025 by Times Higher Education? So which Indian university it is? It is Amrita Vishwa Vidyapeetham, right? So which Indian university secured the global or highest global rank in THE University Impact Ranking? It is Amrita Vishwa Vidyapeetham. Next, and they were on the 41st position globally. Next, according to the report titled Global Drought Outlook, Trends, Impacts and Policies to Adapt to a Drier World. Question asked is that OECD, that is Organization for Economic Cooperations and Development, in June the economic cost of the droughts are expected to increase by at least how much percent? It will be increasing by 15%. Next, what is India's rank in 2025 Sustainable Development Goal Index released by UN Sustainable Development Solutions Network in June 2025? So what is India's rank in the Sustainable Development Goal Index? India stands at 99th position. Who won the F1 Armaco Gran Premio de España, that is the Spanish Grand Prix that was held in Barcelona, Spain. So who won this Barcelona, Spain Spanish Grand Prix held in Barcelona, Spain? Oscar Piastri. Oscar Piastri, he is from UK and he drives for McLaren. He secured the first position here. Next, Australian all-rounder Glenn Maxwell has announced retirement from ODI cricket, bringing an end to a distinguished 13-year career in the ODI format. He has been part of 2 World Cup winning squads for Australia in ICC Men's Cricket World Cup, that is in 2015 and 2023. Right option is option 4th. And earlier he retired from the Test cricket format in 2017. Next, identify the country that topped the medal tally at the Ulaanbaatar Open 2025 wrestling conducted from 29th of May to 1st of June, in which India secured the 2nd position. So which country topped the medal tally? It is Mongolia that secured the top position here in the medal tally at the Ulaanbaatar Open 2025 wrestling that was conducted from 29th of May to 1st of June. And our country India, here we secured the 2nd position in the medal tally with a total of 21 medals. And in this 21 medals, we see 6 gold, 7 silver and 8 bronze. And Mongolia, they secured a total of 29 medals. Next is
Kulnavut Vithidrasan won the men's single title at the 2025 Singapore Open in badminton held from 27th of May to 1st of June at the Singapore Indoor Stadium in Kalang, Singapore. Vithidrasan hails from which state, or he hails from where? So Vithidrasan hails from Thailand. Next is mention the name of the football club which won its first ever UEFA Championship League 2025 by defeating Inter Milan Football Club in the final held at Munich, Germany. So what is the name of that group or football club? It is PSG, that is Paris Saint-Germain Football Club, right? They have won their first ever UEFA Champions League 2025 title by defeating Inter Milan Football Club. Next, identify the correct statement regarding the Norway Chess 2025, an international chess tournament held in Stavanger, Norway from 26th of May to 6th of June. If we look at the option, we have to find the correct statement. So option A is right and C is right, B is wrong. B is saying that D. Gukesh from India won the Norway Chess 25 in the open section category. Did he won it? No. Magnus Carlsen had won it, right? Magnus Carlsen, the world's #1 chess player, won the Norway chess title in the open category. Next, identify the Indian cricketer who announced his retirement from all the formats of professional cricket in June 2025. So, Piyush Pramod Chawla, right? He is the Indian cricketer who has announced retirement from all the forms of professional cricket. Next, identify the correct statement regarding French Open held in Paris, France in June 2025. If we look at the options here, all these three options are rightly mentioned. Next, who among the following won the men's singles final of the Indonesian Open held in Jakarta, Indonesia? So, who among the following has won the women's singles final? N.C. Young. She is from South Korea. If we talk about men's category, Ender Antonsen, who is the world's #3, has won the men's single title of the Indonesian Open, and in women's single title, N.C. Young, right? She's not South Korea. I repeat, she's from South Africa, right? In the women's final, South Africa's N.C. Young, that is world's #1 in women category, she has won the women's single title. And who won the men's single title? Ender Antonsen. Ender Antonsen is from Denmark. Next, mention the country which topped the 2025 Taiwan Athletics Open held in Taipei City in Taiwan in June with a final medal tally of 16 medals. So it is our country, India. Next, identify the country that won the Union of European Football Association, that is UEFA Nations League, by defeating Spain in the finals in Munich, Germany. So identify that country. It is Portugal, right? And they have won their second UEFA Nations League title by defeating Spain by 5-3 in the penalty shootout after a 2-2 final. And this was the 4th edition of the tournament. Next, name the organization that officially unveiled the logo of the inaugural Shooting League of India, which is scheduled to be held from 20th of November to 2nd of December 2025. It is National Rifle Association of India. Next, mention the name of the West Indies cricketer who has announced his retirement from international cricket at the age of 29 in June 2025. It is Nicholas Pooran. Next, identify the country that defeated South Africa to win the 23-25 International Cricket Council World Chess Championship final held in London, England in June 2025. So which is that country? It is Australia, right? And this is the 3rd edition of the ICC WTC, that is World Test Championship, that was held from 16th of June to 14th of June. Next, who won the 63rd edition of the Canadian Grand Prix held in Montreal, Canada, marking his first F1 Grand Prix victory of the 2025 season? So George Russell. George Russell, he is from Germany. Sorry, he represents Germany-based company, that is Mercedes. George Russell, he is from which country? This is your homework. Next, students, let's move to the homework section. First question is, tell me recently Yoga Bandhan was hosted by whom, and what is the main name of this Yoga Bandhan, right? Then second question, for IBCA, International Big Cat Alliance, who joined it recently and who is the president here that has been elected recently? Third question, tell me quantum
Quantum 5G FWA, right? This has been launched. It was launched by which organization? Name that organization. Fourth question, tell me recently what was the rank of India in the Energy Transition Index and who secured the first position and who released this World Economy, this Energy Transition Index. Then fifth question, recently Operation Sindhu was launched by India. What is this Operation Sindhu? Why was it launched? Tell me that. Right? And apart from this, sixth question also similar to that, Operation Midnight Hammer was also launched by one nation. Tell me that also, what was the nation that launched this Operation Midnight Hammer? So these are your 6 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 27 और 28 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सेशन काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक लेटर ऑफ इंटेंट की, जो कि इंडिया ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ साइन किया है टू कॉम्बैट ग्लोबल हंगर। देन हम बात करेंगे यूपीएस से एनपीएस अब स्विच कर सकते हैं हम। यूपीएस है यूनिफाइड पेंशन सिस्टम एंड एनपीएस है नेशनल पेंशन सिस्टम। ये है जो इस साल 1 अप्रैल को आया था, उसको डिस्कस करेंगे। वन वे स्विच फैसिलिटी रहेगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा अलाउ किया गया है। देन हम बात करेंगे, इंडिया ने रिलीज किया फर्स्ट एवर नेशनल गाइडलाइंस फॉर एनिमल ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड बैंक्स के लिए। एंड जेपी नड्डा जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया की हेल्थ वेलफेयर इनिशिएटिव्स को इन मध्य प्रदेश। इन सभी चीज को एंड मेनी मोर डिटेल्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। काफी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा एंड जो कंटेंट हम डेली बेसिस को पे प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही रिफाइंड होता है एंड आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी हेल्प करेगा। ऑल्सो अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड शेयर कर दो हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव सभी के साथ। एक और चीज स्टूडेंट्स, हम सुबह 5 बजे ये डेली करंट अफेयर्स की वीडियो डालते हैं, तो इनको जरूर देखा करो। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। इंडिया ने साइन किया एक लेटर ऑफ इंटेंट विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू कॉम्बैट ग्लोबल हंगर, राइट। यूएन का आर्म है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, राइट। एंड इंडिया से द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा ये पार्टनरशिप की गई है, लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है। एम क्या है कि वर्ल्ड में जो हंगर है ना, हम उसको रोक सकें। हम जिन लोगों तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है प्रॉपर, उन तक यहां पर हम खाना ले जा सकें, राइट। एंड इंडिया के ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक को इंप्रूव करने के लिए, इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड तक पहुंचाने के लिए ये एक इनिशिएटिव साइन किया गया है, जहां पर हम वसुदेव कुटुंबकम को ध्यान में रखते हुए, राइट, जो कि है द वर्ल्ड इज वन फैमिली, राइट। इस इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए हम फर्दर यहाँ पे इस इनिशिएटिव को हम ध्यान में रखेंगे। इवन यहीं पे याद रखेंगे, द गवर्नमेंट, इस जो अग्रीमेंट है इसके अंदर 2 लाख मेट्रिक टन ऑफ फोर्टिफाइड राइस को 5 साल तक यहाँ पे इंडिया के द्वारा फर्दर प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जहां पे भी वर्ल्ड में हंगर है वहां पर ये फूड पहुंच सके एंड ग्लोबल हंगर को हम कंट्रोल कर सके, राइट। फिर इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए, पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल ये कहां पे कंक्लूड हुआ? ये लद्दाख में था, लेह लद्दाख में ये कंक्लूड हुआ, ठीक है। फिर इसी के अलावा रेल वन, ये एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी, वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी पैसेंजर सर्विसेज के लिए। देन इसी के अलावा एक स्कीम आई थी, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम। ये स्कीम किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई थी? ये बिहार के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसका एम क्या है कि जो यूथ हैं उनको इंटर्नशिप्स में हेल्प किया जा सके एंड वो प्रमोट करा जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, देखो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी एक वन टाइम फैसिलिटी अब लॉन्च किया है, वन वे स्विच फैसिलिटी लाए हैं यूपीएस से एनपीएस तक, मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम से एनपीएस तक, नेशनल पेंशन स्कीम में आप स्विच कर सकते हैं। अब 1 अप्रैल 2000
2025 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। एंड इसके बाद जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो सब आपके यूपीएस के अंडर आ जाते हैं, जिसके अंडर आपको 50% की आपको पेंशन बन जाती है, जिसमें आपका सम अमाउंट कटता रहेगा हर साल एंड आखिर में आपकी पेंशन बन जाएगी। इससे पहले स्कीम थी एनपीएस की, नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें क्या होता था, आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दीजिए, सरकार भी उतना कॉन्ट्रीब्यूट करेगी एंड यहां पर जो कॉर्पस होता था इसका 40% आपका यहां पर आपको मिल जाता था, करेक्ट। 60% आपको मिल जाएगा एंड 40% यहां पर आपका रेस्ट अमाउंट से पेंशन बन जाता है। तो अब ये फैसिलिटी दी गई है सरकार के द्वारा, वन टाइम फैसिलिटी है कि आप जो यूपीएस अभी कंपलसरी है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, वो स्विच कर सकते हैं एनपीएस पे। एंड एक बार ये स्विच कर दिया तो ये आप वापस नहीं आ सकते, राइट। इवन जब ये लॉन्च किया गया था यूपीएस 1 अप्रैल 2025 को, तब भी ये फैसिलिटी दी गई थी कि अगर कोई एनपीएस वाला शिफ्ट करना चाहता है टू यूपीएस, वो भी फैसिलिटी थी तब टाइम पर, वो भी वन टाइम फैसिलिटी थी, आप वापस नहीं आ सकते। और अब ये फैसिलिटी दी गई है कि यूपीएस से आप एनपीएस पे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। इंडिया ने रिलीज किया पहला नेशनल गाइडलाइंस फॉर एनिमल ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड बैंक्स के लिए। देखो ये क्या है, जैसे ह्यूमंस के लिए ब्लड बैंक्स होते हैं, जब जरूरत पड़े ब्लड बैंक से आप ब्लड ले सकते हैं, तो वहां पे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि आपको रिटर्न में ब्लड देना होता है, राइट। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस ब्लड देना होता है, वरना आप कुछ अमाउंट पे करके आप ब्लड ले सकते हैं। अब सिमिलर काइंड ऑफ गाइडलाइंस यहां पे एनिमल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए लॉन्च की गई है, क्योंकि पहले कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं था यहां पर। एंड यहां पे ये नई गाइडलाइंस आई है जिसके अंदर हम देखेंगे कि एनिमल्स के लिए भी जब उनको ब्लड की जरूरत पड़े, उनके लिए ब्लड अवेलेबल हो सके, राइट, एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके, ये फैसिलिटी यहां पे लॉन्च की गई है। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। फिर भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, राइट। इसका थर्ड एडिशन हमें देखने को मिला। ये थर्ड एडिशन होगा, कहां पर होगा, दिल्ली एनसीआर रीजन में होगा, राइट। ये 2027 का ग्लोबल भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो है, राइट। फिर इसी के अलावा अगर हम बात करें, अमित शाह जी के द्वारा इंडिया का पहला अमित शाह जी के द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी ये लॉन्च की गई, कहां पर, गुजरात में इसको लॉन्च किया गया, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं जेपी नड्डा जी, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया की हेल्थ वेलफेयर इनिशिएटिव्स मध्य प्रदेश में। डॉक्टर मोहन यादव जी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट थे, राइट। जेपी नड्डा जी यहाँ प्रेजेंट थे एंड यहाँ पे वेलफेयर इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, जिससे जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उनको बेनिफिट देखने को मिलेगा, राइट। उनको सहूलियत मिलेगी बहुत सारी इनिशिएटिव्स के अंदर। यहीं पे अगर हम देखें, जैसे 2 मेडिकल कॉलेजेस श्योपुर में एंड सिंगरौली में लॉन्च किए गए। आयुष्मान शक्ति स्मार्ट चैटबॉट को लॉन्च किया गया, जहां पर आपको सभी सर्विसेज से रिलेटेड, आपकी ट्रीटमेंट से रिलेटेड, आपके प्रोसीजर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड आशा संवाद प्लेटफॉर्म, ये सारी चीजें यहाँ पे लॉन्च की गई, तो इसको मार्क करेंगे, ठीक है। फिर इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये आपका ब्रिक्स का बैंक है एंड बोला जा रहा है, काफी आर्टिकल्स में पढ़ रहा हूं कि ये बैंक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को रिप्लेस करने की काबिलियत रखता है। कमिंग बैक टू द न्यूज, न्यू डेवलपमेंट बैंक में किसने ज्वाइन किया अभी, कोलंबिया ने एंड उज्बेकिस्तान का यहाँ पे ज्वाइन हमें देखने को मिला, इन दोनों ने ज्वाइन किया न्यू डेवलपमेंट बैंक को, राइट। फिर इसी के अलावा किस कंपनी ने अभी पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन शट कर दिया आफ्टर 25 ईयर्स, वो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट से याद रखेंगे, अभी इलॉन मस्क के द्वारा एक नई एआई कंपनी लॉन्च की है जिसका नाम है मैक्रो हार्ट, ठीक है। फिर इसी के अलावा इंडियन मैंगो मेनिया, ये लॉन्च किया गया कहां पर, इंडियन मैंगो मेनिया, ये लॉन्च किया गया कहां पर, ये लॉन्च किया गया आबू धाबी में, ताकि प्रीमियम इंडियन मैंगोज को ग्लोबली हम प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं, ओपन एआई, चैट जीपीटी इन्होंने लॉन्च किया था, सैम ऑल्टमैन की ये कंपनी है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया का पहला लर्निंग एक्सेलरेटर जो सपोर्ट करेगा स्टूडेंट्स को एंड टीचर्स को, एजुकेटर्स को, राइट। इसके अंदर हम देखेंगे ओपन एआई के जो मॉडल्स हैं उनको यहां पे लॉन्च किया गया, चैट जीपीटी यहां पे फ्री किया गया इनके द्वारा। एंड एआई को हम कैसे यूज कर सकते हैं, एआई को हम कैसे बेटर ला सकते हैं अपने डेली लर्निंग एक्टिविटीज में, राइट। इसीलिए ये यहां पे एक्सेलरेटर इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया है, जिससे एक्सेस बढ़ेगा, रिसर्च के ऊपर बहुत फोकस होता हुआ दिखेगा एंड एआई के ऊपर ट्रेन किया जाएगा। 4.5 करोड़ रुपए यहां खर्च किए गए हैं, स्टडी मोड टूल यहां पे लॉन्च किया गया है एंड 5 लाख फ्री चैट जीपीटी लाइसेंसेस दिए गए टीचर्स को एंड स्टूडेंट्स को, मार्क करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। इसी के अलावा अगर आपसे जरा पूछा जाए, जरा बताओ अभी रिसेंटली यूपीआई ट्रांजैक्शन का एक नंबर याद रखेंगे, 18.4 बिलियन ट्रांजैक्शंस यहां पर हमें देखने को मिली जून के महीने में, राइट। फिर वो पहला बैंक कौन सा बना यूएई का, जिन्होंने अपना ऑपरेशन खोला है गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में, वो है मैशरक बैंक,
ठीक है, मार्क करेंगे इसको। फिर इसी के अलावा अभी रिसेंटली किन को अपॉइंट किया गया नया रॉ चीफ, वो है पराग जैन को, न्यू रॉ चीफ यहां पे अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इन्होंने पार्टनर किया एनएमसी, जो कि है नेशनल मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स, सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट्स एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी। इन 4 ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पे पार्टनर किया। रीजन क्या था, मैराथन लॉन्च करने के लिए, मार-अ-थॉन, मैर यहाँ पे मैरीटाइम इकोनॉमी को डिनोट किया गया है। अब देखो ये मैराथन क्यों लॉन्च की गई, कि हम मैरीटाइम सेक्टर को ग्रो कर सकें, यहाँ पे हम न्यू टेक्नोलॉजी ला सकें, न्यू डिवाइसेस का हम यहाँ पे पेनिट्रेशन देख सकें, हम न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर इस सेक्टर को ग्रो कर सकें, नए स्टार्टअप्स यहाँ पर हमें देखने को मिल सकें। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं मैराथन क्या होता है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है जहां पर कई सारी टीम्स उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम करती हैं एंड उसके सॉल्यूशंस निकालती हैं। फिर उन स्टार्टअप्स में से जिनका बेस्ट सॉल्यूशन होता है उनको यहाँ पे उन स्टार्टअप्स को यहाँ पर हम फंड भी प्रोवाइड करा जाता है ताकि वो अपने प्रोग्राम को फर्दर कैरी आउट कर सके, अपने प्रोजेक्ट को फर्दर कैरी आउट कर सके, राइट। तो ये मैराथन 2025 हुआ, आईआईटी मद्रास में हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा हुआ, इन कंपनीज इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हुआ ताकि मैरीटाइम सेक्टर को ग्रो करा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखेंगे, किनको अपॉइंट किया गया है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो है साहिल किन्नी को यहां पे नया सीईओ अपॉइंट किया गया है आरबीआई हब का, ठीक है। फिर किनको रीइलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो है सुधांशु मित्तल। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है, आप यहां पर 3 पिक्चर देख रहे हैं, राइट। ये कौन कौन है, ये है आपके राइट साइड में हम देख सकते हैं, ये कौन है, ये है अटल बिहारी वाजपेयी, देन बिरसा मुंडा जी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट। तो 3 हाई लेवल कमिटीज यहां पे इनके लिए एस्टेब्लिश की गई हैं, राइट। इनकी एनिवर्सरी इनको कमेमोरेट करने के लिए, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए, एंड यहां पर हम देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये एस्टेब्लिश की गई। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 105th बर्थ एनिवर्सरी, बिरसा मुंडा जी की 150th एंड अटल बिहारी वाजपेयी की 100th बर्थ एनिवर्सरी यहां पे रहेगी। एंड ये तीनों हाई लेवल कमिटीज को चेयर किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो कमेटी रहेगी हाई लेवल कमिटीज में 124 मेंबर रहेंगे, बिरसा मुंडा जी के लिए जो कमेटी है 118 मेंबर्स, एंड अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी 124 मेंबर्स यहां पर हमें देखने को मिलेंगे, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर इसके अलावा अगर पूछा जाए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अभी कहां का हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया गया, तो घाना के हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया गया, राइट। देन इन्हीं को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, उनका हाईएस्ट ऑनर है, उससे सम्मानित किया गया। देन बात करें दीपिका पादुकोण की, ये वो पहली इंडियन एक्ट्रेस बनी जिन्होंने ऑनर किया गया हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास 2026 से, ठीक है, मार्क करेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गोल्डमैन शेक को भी अपॉइंट किया गया है एज अ सोल बैंकर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना स्टेक डाइवेस्ट करना चाहती है इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक में 5% से ये अपना डाइवेस्ट करेंगी। एंड इसके लिए जो बैंकर यहां पे अपॉइंट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो है गोल्डमैन शेक्स, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। फिर इसी के अलावा जरा बताओ अभी रिसेंटली किनके द्वारा ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स को जीता गया, तो लैंडो नॉरिस के द्वारा जीता गया, राइट। देन इसी के अलावा अगर मैं बात करूं फास्टेस्ट यूथ ओडीआई सेंचुरी किसकी है, वैभव सूर्यवंशी की है, राइट। फिर इसी के अलावा अगर पूछा जाए किन्होंने अभी नीरज चोपड़ा इनॉग्रल क्लासिक 2025 में गोल्ड मेडल जीता, तो नीरज चोपड़ा के द्वारा ही जीता गया, राइट। एंड इनका थ्रो था 86.18 मीटर का थ्रो। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी, इनके द्वारा हेल्थ एसआईपी प्लान एंड हेल्थ बडी ऐप, ये 2 चीज यहां पे लॉन्च की गई हैं जिससे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और बेटर हो सके एंड बेटर यहां पे फीचर्स, बेटर सर्विसेज यहां पे लोगों तक पहुंच सके एंड बेटर प्रीमियम प्लान हो सके। फिर इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पर, नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। अगर हम बात करें सबसे पहले IRSE जो कि है इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, राइट। इनके ऑफिसर हैं SC जैन, इनको अपॉइंट किया गया एज द एडिशनल चार्ज ऑफ द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड का इनको एडिशनल चार्ज यहां पर दिया गया है,
राइट। फिर अभी NHAI के द्वारा एक एनुअल टोल पास लॉन्च किया गया है 3,000 रुपए का, जिसमें आपको कितनी टोल्स की फ्री राइड मिलेगी, तो 200 टोल्स तक आप यहाँ पे फ्री में आ जा सकते हैं। करेक्ट, एक चीज। फिर इसी के अलावा अभी रिसेंटली पीएम मोदी के द्वारा 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे दिल्ली में, UER-2 और उससे काफी पहले लॉन्च किया गया था द्वारका एक्सप्रेसवे, ये दोनों याद रखेंगे। फिर इसी के अलावा अभी प्रेस रजिस्ट्रार जनरल इनके द्वारा प्रेस सेवा लॉन्च किया गया, ये एक पोर्टल जो कि सिंप्लीफाई करेगा आपके न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल रजिस्ट्रेशंस को। ये इंपॉर्टेंट है चीजें। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं एक और चीज, एनसीईआरटी में अभी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी अभी लेसन यहां पे ऐड किया गया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसकी हम बात कर रहे थे, राइट। ब्रिक्स का बैंक है एंड यहां पर इन्होंने अपॉइंट किया राजीव रंजन को एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर। 5 साल के लिए यहां पे इनको अपॉइंट किया गया है। सो मार्क करके चलेंगे इसको, राइट। 5 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर मैं बात करूं 4th एडिशन ऑफ सेमिकॉन इंडिया 2025 कब होगी, 2 सितंबर को होगी, राइट। 4th एडिशन रहेगा इसका। फिर इसी के अलावा 1 फ्री जोन पासपोर्ट ये लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, दुबई के द्वारा लॉन्च किया गया है, ताकि बिजनेस एक्सपेंशन में इजी हो सके। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की, 1st एडिशन था। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया था। हिमालयन किंगफिशर यहाँ पे मैस्कॉट है, आप यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये है हिमालयन किंगफिशर मैस्कॉट है। ये है लोगो में आप शिकारा देख सकते हैं, जिस रिवर के ऊपर ये है वो है डल लेक, या फिर जिस लेक के ऊपर है डल लेक श्रीनगर में, करेक्ट। तो पहला एडिशन था खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का 21 से 23 अगस्त तक डल लेक श्रीनगर में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया। हिमालयन किंगफिशर यहां मैस्कॉट रहेगा, शिकारा इसकी लोगो रहेगा। टोटल मेडल्स यहां पे 24 मेडल्स रहे। मध्य प्रदेश के द्वारा पहली पोजीशन सिक्योर करी गई, यहां पर मार्क करके चलेंगे, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप के ऊपर। वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप हमें देखने को मिली एंड इंडिया ने शाइन किया विनिपेग कनाडा में। ये इवेंट कहां पर हुआ था, विनिपेग कनाडा में हुआ था। वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप के द्वारा इसको यहां पे जीता हुआ था। ये वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 17 से 24 अगस्त तक ये हुआ था, विनिपेग कनाडा में हुआ था। यहां पे मेडल टैली की बात करें तो मेडल टैली में किसने टॉप किया, साउथ कोरिया ने टॉप किया 10 मेडल से। इंडिया 2nd पोजीशन पे आ जाता है 8 मेडल से एंड यूएसए 3rd पोजीशन पे आ जाता है इन द मेडल टैली, राइट। फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अभी एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की बात कर रही है मून पर, वो है नासा, ठीक है। फिर वेनेरा डी ये एक मिशन है जो कि वीनस पे जाएगा, 2036 तक यहां पे पहुंचेगा, राइट। सॉरी 2036 तक इसको लॉन्च किया जाएगा, किसके द्वारा, रशिया के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ये 19th एडिशन था वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप का, मार्क करके चलेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ये इंडिविजुअल्स जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता यहां पे इवेंट में, राइट स्टूडेंट्स। फिर एक इंपॉर्टेंट बुक की बात करेंगे, सेशंस ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया। ये संजय बारू जी के द्वारा इस बुक को यहाँ पे ऑथर किया गया है। ये पेंगुइन वाइकिंग इंडिया के द्वारा बुक को पब्लिश किया जाएगा। इस बुक में बताया गया कि जो इंडिया में हम ट्रेंड देख रहे हैं कि क्या है कि आजकल लोग इंडिया से बाहर जाना ज्यादा पसंद करते हैं, परमानेंटली अब्रॉड सेटल होना पसंद करते हैं, एंड जो ये माइंडसेट चेंज होता हुआ दिखा है वो इस बुक में दर्शाया गया है। एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडिया टर्म होता था, यहां पर इन्होंने टर्म दिया नॉन रिटर्निंग इंडियंस, राइट स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद स्टेट न्यूज पर आते हैं, दिल्ली एंड ओस्लो नॉर्वे में, राइट। इन दोनों के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ ताकि ई मोबिलिटी सॉल्यूशंस के ऊपर काम किया जा सके, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशंस के ऊपर काम किया जा सके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स यहां पे लॉन्च किया जा सके दिल्ली में, एंड प्रॉपर एक रोड मैप बनाया जा सके जिससे दिल्ली के ट्रांजिशन में हेल्प की जा सके। इसीलिए यह पार्टनरशिप हुई, और पार्टनरशिप थी ये दोस्ती है, दिल्ली ओस्लो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव। तो दोस्ती आते ही समझ जाना इंडिया और ओस्लो के बीच में हुई थी। देन 20 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं सद्भावना दिवस। 15 अगस्त को हमने जानते हैं, आपका होमवर्क रहेगा कि कौन सा एडिशन था इंडिपेंडेंस डे का जो हमने इस बार ऑब्जर्व किया, राइट। देन 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हम ऑब्जर्व करते हैं, राइट। फिर इसी के साथ साथ वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। देन इंडियन अक्षय ऊर्जा डे 20 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है।
23 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल स्पेस डे, इसकी आप थीम बताना, ये आपका होमवर्क रहेगा। 22 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स आज के जो आपको याद रखने हैं। बहुत अच्छा सेशन था, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना स्टूडेंट्स, एंड मैं चाहता हूं मैक्सिमम बच्चे आज की वीडियो को लाइक करें यहाँ पे। इसके बाद हम चलते हैं रिवीजन पार्ट पे स्टूडेंट्स, काफी बेनिफिशियल रहेगा ये भी, रिफाइंड वे में हम टू द पॉइंट आपको क्वेश्चंस देंगे जिससे आपकी रिवीजन अच्छी होती हुई दिखेगी। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है ओडीआई क्रिकेट से, एंड ही हैज बीन पार्ट ऑफ 2 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड्स फॉर ऑस्ट्रेलियन आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 एंड 2023 के लिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री दैट टॉप द मेडल टैली एट द उलानबातर ओपन रेसलिंग कंडक्टेड फ्रॉम 29th of May to 1st of June, in which India secured second position। तो किसने यहाँ पे टॉप किया है मेडल टैली में, वो है मंगोलिया। अगर मंगोलिया के मेडल्स देखें तो मंगोलिया के 29 मेडल्स हैं, जिसमें से 7 गोल्ड, 10 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज रहेंगे। हमारी कंट्री इंडिया अगर हम देखें यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आ जाती है मेडल टैली में विद 21 मेडल्स, जिसमें से 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज रहेंगे। नेक्स्ट, कुनलावुत विचित्रसन, इन्होंने मैन सिंगल टाइटल जीत लिया है सिंगापुर ओपन का फॉर बैडमिंटन। पूछा जा रहा है ये जो विचित्रसन है ये कहाँ से हैं, ये थाईलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द फुटबॉल क्लब विच वन इट्स फर्स्ट एवर यूएफए चैंपियंस लीग टाइटल बाय डिफीटिंग इंटर मिलान फुटबॉल क्लब इन द फाइनल, जो कि एलियंस एरेना में हुआ था म्यूनिच जर्मनी में। सो मेंशन द नेम ऑफ द फुटबॉल क्लब, उस फुटबॉल क्लब का नाम बताओ, क्या रहेगा, वो है पीएसजी, पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉर्वे चेस 2025, जो कि एक एनुअल इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट है जो कि नॉर्वे में हुआ 26 मई से 6 जून तक। अगर यहाँ पे देखें हम ऑप्शन, तो ऑप्शन ए बिल सही है, बी और सी भी सही है, बी गलत है। ये कह रहे हैं डी गुकेश जो कि इंडिया से हैं, इन्होंने नॉर्वे चेस टाइटल को जीत लिया इन ओपन सेक्शन कैटेगरी, तो नहीं, डी गुकेश ने नहीं जीता, मैग्नस कार्लसन जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर है उन्होंने जीता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द इंडियन क्रिकेटर हु अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ प्रोफेशनल क्रिकेट इन जून 2025, तो वो है पीयूष प्रमोद चावला। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रेंच ओपन जो कि पेरिस में हुआ इन जून 2025। अगर यहाँ पे देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द वीमेन सिंगल फाइनल एट द इंडोनेशियन ओपन, जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। तो वीमेन सिंगल टाइटल इंडोनेशियन ओपन का एनसी यंग ने जीता। क्या एनसी यंग साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं, राइट। यहीं पे अगर मैं मेन सिंगल की टाइटल की बात करूं तो मेन सिंगल टाइटल किन के द्वारा जीता गया, वो है एंडर्स एंटोनसन, ठीक है। नेक्स्ट, एंड ये 43rd एडिशन था आपका इंडोनेशियन ओपन का। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री दैट विच टॉप द 2025 ताइवान एथलेटिक्स ओपन हेल्ड इन ताइपेई सिटी इन ताइवान इन जून विद अ फाइनल मेडल टैली ऑफ 16 मेडल्स, तो ये रहेगी इंडिया। Next, identify the country that won the UEFA Nations League title by defeating Spain in the final held in the Munich, Germany in June 2025, तो वो है पोर्चुगल। Next, name the organization that officially unveiled the logo of the inaugural Shooting League of India, which is scheduled to be held from 20 of November to 2nd of December 2025। So name that organization, वो है National Rifle Association of India। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द वेस्ट इंडीज क्रिकेटर जिन्होंने अनाउंस की रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से एट द एज ऑफ 29, तो वो है निकोलस पूरन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने साउथ अफ्रीका को डिफीट किया टू विन द 2023 से 25 का आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि लंदन यूके में हुआ था। तो किन्होंने जीत लिया है, ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया फाइनल्स में, एंड ये 3rd एडिशन था आपका आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। नेक्स्ट, किन्होंने अभी 63rd एडिशन ऑफ कैनेडियन ग्रैंड पिक्स को जीत लिया है, वो है जॉर्ज रसल। जॉर्ज रसल किन के लिए ड्राइव करते हैं, ये मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, मेंशन द पोजीशन दैट इंडिया सिक्योर्ड इन द आईएसएसएफ राइफल पिस्टल एंड शॉटगन वर्ल्ड कप जो कि म्यूनिच जर्मनी में हुआ, इन विच चाइना ने टॉप किया मेडल टैली में विद द टोटल ऑफ 7 मेडल्स। तो ये 3rd एडिशन था, ये 3rd पोजीशन थी जो कि इंडिया ने सिक्योर करी इन दिस आईएसएसएफ राइफल पिस्टल एंड शॉटगन वर्ल्ड कप, जहां पे चाइना ने टॉप किया इन दिस मेडल टैली विद द टोटल ऑफ 7 मेडल्स। इंडिया के टोटल 4 मेडल थे, जिसमें से 2 गोल्ड थे, 2 ब्रॉन्ज थे। नेक्स्ट, mention the first Indian sponsor team that made history by winning the rapid section of the 3rd edition of the FIDE World Rapids and Blitzstream Championship जो कि लंदन में हुआ इन जून 2025। तो mention that Indian sponsor team वो है MGDI।
नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द टेबल टेनिस टीम जिन्होंने अभी पहला मेडन अल्टीमेट टेनिस टेबल टेनिस टाइटल को जीत लिया बाय डिफीटिंग जयपुर पेट्रियट्स इन द फाइनल्स हेल्ड इन अहमदाबाद गुजरात। तो वो है यू मुंबा टेबल टेनिस। नेक्स्ट विद अ थ्रो ऑफ हाउ मच डिस्टेंस नीरज चोपड़ा ने अभी पेरिस डायमंड लीग को जीत लिया है बाय डिफीटिंग जर्मनी के जूलियन वेबर। तो 88.16 मीटर का ये थ्रो था जहां पर नीरज चोपड़ा ने इसको थ्रो करके यहाँ पे इस टाइटल पेरिस डायमंड लीग को जीत लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द मैस्कॉट ऑफ द 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप गोइंग टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली लॉन्च बाय पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया इन जून 2025। तो उस मैस्कॉट का नाम बताओ, वो है विराज। नेक्स्ट इन जून विच स्टेट साइन एन एमओयू विद हॉकी इंडिया टू होस्ट द FIH मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025। तो किस स्टेट ने यहाँ पे एमओयू साइन किया, वो है तमिलनाडु। कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे टेलीकॉम 2025 दैट इज CMST ये रिलीज़ किया गया बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। पूछा जा रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ रूरल वीमेन दैट आर एज्ड 15 साल से ऊपर डू नॉट ओन अ मोबाइल फ़ोन। मतलब 15 साल से ऊपर कितनी ऐसी वीमेन हैं इन परसेंटेज टर्म्स जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। तो यह है 51.6%। यहीं अगर हम देखें 85.5% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनकी फैमिली में कम से कम एक स्मार्टफोन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट ISSAR इन्होंने रिलीज़ किया इसरो की एक रिपोर्ट जो बताती है कि हाउ मैनी इंडियन एयरक्राफ्ट हैव बीन प्लेस्ड इन अर्थ ऑर्बिट एज ऑफ 31 दिसंबर 2024। तो कितने स्पेसक्राफ्ट पुट किए गए हैं इंडियन स्पेसक्राफ्ट इनटू द ऑर्बिट, वो है 136। नेक्स्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की एक रिपोर्ट जो है इंडियाज़ AI रेवोल्यूशन अ रोड मैप टू विकसित भारत, जो एस्टिमेट करता है दैट इंडिया विल रिक्वायर 1 मिलियन स्किल्ड AI प्रोफेशनल्स बाय 2026। तो ये है MEITY मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो बताती है कि 1 मिलियन जो कि है 10 लाख हमें AI प्रोफेशनल चाहिएंगे 2026 तक। नेक्स्ट ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट फॉर 2024-25 दैट इज़ लीडरशिप इन एजुकेशन लीड फॉर लर्निंग, इसको पब्लिश किया गया यूनेस्को के द्वारा जून के महीने में, जो बताता है दैट फॉर एवरी 100 गर्ल्स हाउ मैनी बॉयज़ अटेन मिनिमम प्रोफिशिएंसी लेवल। तो मतलब अगर 100 बॉयज़ या फिर 100 गर्ल्स प्रोफिशिएंसी लेवल अचीव कर रहे हैं तो कितने बॉयज़ इनके कंपैरिजन में प्रोफिशिएंसी लेवल अचीव कर रहे हैं, वो है 87, ऑप्शन 1। नेक्स्ट इंडिया ने सिक्योर करी कौन सी रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जहाँ पर डेनमार्क ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी, दैट वाज टॉप बाय डेनमार्क एंड एट द 4th पोजीशन विच वाज द फर्स्ट 3 पोजीशंस रिमेनिंग वेकेंट, राइट। मतलब पहली, दूसरी, तीसरी ये तो तीनों तो खाली रही, जो हम फर्स्ट कह रहे हैं वो डेनमार्क की है जो कि एक्चुअली 4th पोजीशन पे आ जाती है, मतलब टॉप डेनमार्क नहीं करा यहाँ पर। एंड पूछा गया इंडिया की क्या रैंक रही, तो इंडिया 10th पोजीशन पर आ जाता है इसमें। नेक्स्ट विच कंट्री लीड्स ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग फॉर ओवर 25% ऑफ द टोटल ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट एज पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जो रिलीज़ की गई जून के महीने में। तो पूछा जा रहा है किस कंट्री ने लीड किया ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट को, वो है चाइना ने, राइट। चाइना बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है स्टूडेंट्स, एंड एज पर द रिपोर्ट जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है ऑन एनर्जी इट इज़ प्रोजेक्टेड टू रीच एट $3.3 ट्रिलियन 2025 तक। नेक्स्ट मेंशन द नेम ऑफ द सिटी दैट इज़ नॉट रैंक्ड अमंग द टॉप 5 सिटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर डाटा सेंटर कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब वो डाटा सेंटर कैपेसिटीज अंडर कंस्ट्रक्शन है, राइट, एज ऑफ एंड 2024 एज पर द रिपोर्ट जो रिलीज़ की गई है किसके द्वारा, कशमन एंड वीकफील्ड के द्वारा। तो इसमें से कौन सी सिटी है दैट इज़ नॉट रैंक टॉप 5, तो मुंबई यहाँ पे टॉप 5 में रैंक्ड नहीं है। नेक्स्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया जिसका टाइटल है द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस द परसूट ऑफ रिप्रोडक्टिव एजेंसी इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, जो हाईलाइट करती है बैरियर्स को प्रिवेंटिंग पीपल इंक्लूडिंग इन इंडिया फ्रॉम अचीविंग देयर रिप्रोडक्टिव एस्पिरेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को, तो ये रिलीज़ किया गया है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा, राइट। एंड ये रिपोर्ट बताती है दैट 1 in 5 पीपल ग्लोबली एक्सपेक्ट नॉट टू हैव द नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो वो डिज़ायर करते थे, रीज़न बीइंग कि महंगाई बढ़ गई है, हाउसिंग के खर्चे हैं, जॉब इनसिक्योरिटी है, राइट। इन सब की वजह से इंडिविजुअल्स वो प्लान नहीं कर रहे टू हैव बेबी।
नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड बैंक की बाई एनुअल रिपोर्ट जिसका टाइटल है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस फॉर जून 2025। व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड फॉर FY26? तो कितनी प्रोजेक्टेड है? 6.3% की। फिर आ जाते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द 19th एडिशन ऑफ द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 जो कि रिलीज की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो 131st पोजीशन पे आ जाता है इंडिया। आइसलैंड ने यहाँ पे टॉप पोजीशन सिक्योर करी फॉर द 16th टाइम, मतलब 16वीं बार आइसलैंड ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी है। नेक्स्ट आ जाते हैं एज पर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डाटाबेस ऑन इंटरनेशनल लेबर स्टेटिस्टिक्स जो रिलीज किया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जून के महीने में। व्हाट इज इंडिया सोशल सिक्योरिटी कवरेज 2025 का? तो 64.3% का सोशल सिक्योरिटी कवरेज हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इन जून नेटो इन्होंने लॉन्च किया 53rd एडिशन ऑफ द मैरीटाइम फोकस्ड एक्सरसाइज जो कि है बाल्टॉप्स दैट इज बाल्टिक ऑपरेशन 2025 की। कहाँ पर ये एक्सरसाइज लॉन्च की? लेटविया में, right in the Baltic Sea region. Next, as per the data released by the Tea Board of India under the Ministry of Commerce and Industry, what does the total tea export from India during the calendar year 24? तो कितना total tea export हमें देखने को मिला था? वो था 254.67 million kilograms. Next, according to UN Women's Fact Sheet titled Women in Politics, कितनी परसेंटेज ऑफ वीमेन इंडिया की पॉलिटिक्स को भी रिप्रेजेंट करती है या इंडियन यूनियन कैबिनेट को रिप्रेजेंट करती है? वो है 9.7% का, एंड ये सेकेंड लोएस्ट प्रोपोर्शन है सिंस 2011। नेक्स्ट, एज पर द रिपोर्ट ईयर बुक फॉर 2025 आर्मेंट्स डिसआर्मेंट्स एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी जो कि रिलीज की गई सिप्री के द्वारा, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर आर्सनल वॉरहेड्स एज ऑफ जनवरी 2025? तो जनवरी के महीने में इंडिया का जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है इंडिया के पास कितने हैं? तो 180 वॉरहेड्स हैं हमारे पास। ठीक है, 172 वॉरहेड्स थे 2024 में, जिसमें अभी हमने 8 वॉरहेड्स की बढ़ोतरी करी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द होमवर्क सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी रिसेंटली योगा बंधन was hosted by whom and what is the main aim of this yoga bandhan, right? Then second question, for IBCA International Big Cat Alliance, who joined it recently and who is the president here that has been elected recently? Third question, tell me quantum 5G FWA, right? This has been launched. It was launched by which organization? Name that organization. Fourth question, tell me recently what was the rank of India in the energy transition index and who secured the first position and who released this world economy this energy transition index. Then fifth question, recently Operation Sindhu was launched by India. What is this Operation Sindhu? Why was it launched? Tell me that, right? And apart from this, sixth question also similar to that, Operation Midnight Hammer was also launched by one nation. Tell me that also, what was the nation that launched this Operation Midnight Hammer? So these are your 6 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.